ओके एवरीबॉडी, सो दिस इज द फाइनल वर्जन पीडीएफ में जो सबसे पहला क्यू कार्ड आया है. डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज ब्रोकन इन योर होम एंड देन रिपेयर्ड. सो लेट्स सी. क्वेश्चंस हैं व्हाट इट इज, how it was broken, how did you get it repaired, and how you felt about it. So let's see the sample answer. Usually everyone tries to be careful about the important things. आमतौर पर हर कोई कोशिश करता है कि important जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखा जाए. But sometimes unknowingly का मतलब है अनजाने में, we break things, and it also happened with me. मेरे साथ भी ऐसा हुआ once when my father brought a new wall clock. Brought bring की second form है. It was a beautiful clock with a great combination of colors like red and blue. I remember clearly, I vividly remember की जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं. I remember clearly that I was crazy about. I was crazy about that means कि मुझे बहुत शौक था गेम्स को खेलने का, playing games, especially basketball. And one day I was playing past continuous. बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको 6+ पैन स्कोर चाहिए खास तौर पर, राइट, 6.5, 7, 7.5. सो उसके लिए आपको past continuous जरूर यूज करना चाहिए. I was playing at my home with one of my friends because it was Sunday. Although my mother asked us to play outside, हालांकि मेरी मदर ने बोला कि बाहर जाके खेलो, however, फिर भी we kept on playing. kept on के साथ जब हम लोग ing यूज करते हैं इसका मतलब है कि ये हम लोग करते रहे. जैसे मुझे बोलना हो कि हम लोग डांस करते रहे, we kept on dancing, we kept on playing, and suddenly my friend threw the ball at me. फ्रेंड थ्रू द बॉल एट मी. यहाँ पर फ्रेंड आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा गया है, सो फ्रेंड आएगा यहाँ पर. माई फ्रेंड थ्रू द बॉल एट मी, बट अनलकीली आई couldn't catch the ball and the ball hit the clock and it was broken. We were so scared because my father was very strict, and when my father came home I was reprimanded. Reprimanded का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, a lot by my father. Honestly saying, I felt so bad because it was my fault. Luckily it was under warranty and my father sent me to get it repaired from the Gupta clock store. Uncle Gupta repaired it and changed its main machine because that was completely broken. पूरी तरह से टूट चुकी थी. मैंने thank किया Uncle Gupta from the bottom of my heart and got it back at home. Since then, तब से I never played at home. कभी मैंने घर पे खेला नहीं है कुछ भी, कोई ऐसी गेम को, बिकॉज थिंग्स मे नॉट बी प्राइसी. हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो महंगी ना हो. प्राइसी मीन्स एक्सपेंसिव, बट देर प्राइसलेस एज वी हैव फीलिंग्स अटैच्ड टू दैम. I think we all learned some important lessons from our silly mistakes, जो हमारी silly mistakes होती हैं, as I learned from that mistake. So this was our today's cue card part 1. आपको बता दूं बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं जितने भी लेटेस्ट अभी पार्ट 1 जनवरी टू अप्रैल 2022 में पूछे गए हैं. सो उम्मीद करता हूं आज का सैम्पल आंसर आपको जरूर पसंद आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.